इतना सन्नाटा कैसे हो गया भाई? आवाज 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 आवाज! सारे कैमरा फ्लैशलाइट्स ऊपर, माइक ऑन करो। चेक 1 2 3 चेक। आप सब छात्रों के हित की लड़ाई करने वाले, छात्रों की गूंज को आगे बढ़ाने वाले, प्लीज वेलकम वंस अगेन एवरीबॉडी। Check 1 2 3 check. Let's go, it's time, Shri Rahul Gandhi! Oh my God. कितना प्यार करते हो और जोर से बताओ आवाज के साथ, कम ऑन। Hello. Good evening. How is everybody? All well? I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you and Gota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. Some time back, I walked from Kanyakumari to Kashmir. 4,000 kilometers रास्ते में आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ, और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS, or then forces. These are the 5 answers I used to get. So the first question that came